So, good evening, everyone. Good evening, guys. My name is Maurya Hanspal, and today we're going to talk about advanced fundamental analysis. You got me right. Not only fundamental analysis, but advanced fundamental analysis. I completely agree that in the previous sessions, in the previous week, we talked about fundamental analysis, but that was in the sense of a basic context or max to max intermediate concept. We tried to analyze what exactly is fundamental analysis. We tried to understand the difference between fundamental and technical analysis. Also, we tried to understand the difference between trading and investment. Also, we tried to understand various kinds of financial ratios. Also, we talked about the different methods of valuation, right? But in today's session, we're going to take one more step ahead and we'll talk about advanced fundamental analysis. So, in this session, I'll be covering a few of the terms which are quite common when you people analyze the annual report of the company, for which a large number of people are confused about. One is the deferred tax assets and deferred tax liabilities. Also, the exact difference between the concepts of the reserves and provisions. Also, I'll be covering today the financial ratios of banking sector. So make note of one thing. All those ratios that we did in the previous session, those ratios, they tend to be common for all the industries, but you cannot use them blindly for all the industries, right? Every sector, every industry has some additional set of ratios apart from those ratios which we studied in the previous session. Banking sector would have some different ratios. Insurance sector would have some different ratios, some different for the IT sector, some different for the metal industry, some different for the oil extraction companies. These additional ratios are something that you need to know. And if you people are also appearing for the corporate interviews for different companies, be it you go for the banking, finance, services, or insurance sector, popularly called as the BFSI sector, all these ratios are quite common. They'll ask you specific banking ratios. They'll ask you specific insurance ratios or different kinds of ratios which are used additionally as a part from those ratios which we studied in the previous session. Okay, so that is one thing you people need to know. So, covering the first aspect. So, that is the major difference between the deferred tax assets and deferred tax liabilities. When you analyze the annual report of a company, you see the concept or the term of deferred tax assets in the current assets ka section and the deferred tax liabilities in the current liabilities ka section, right? So what is the exact difference between the deferred tax assets and deferred tax liabilities? So as the name suggests, deferred, something is being deferred. Okay, either you have paid that amount in advance. The first case, you have paid a certain amount in advance. First case. And second case, you have not paid the amount till now, or you have paid a lesser amount. First case, you have paid certain amount in advance payments. And the second case, you have not yet paid a certain amount or paid less. Something is still outstanding, right? Deferred हो रहा है. अब deferred क्या हो रहा है? As the name suggests, deferred tax. It means it is something related to the purpose of taxations, right? Either you have paid taxes in advance, first case, or either you have paid less amount of taxes or there are some outstanding taxes. Again, first case, either you have paid some advance taxes or more amount of taxes, and in the second case, either you have paid less amount of taxes or no taxes. That is outstanding in some case, right? So what happens when the income is accounted for? You basically have two books of accounting. One, which is maintained by your company. Like for example, if I have my own company as company A, so I'll have my own financial statements. And the same financial statements would be kept by the tax authorities as well. Matlab, there would be a particular way in which I would be like preparing or assessing my financial statements.
And the tax authorities, for the purpose of calculation of the tax, would do it in some other way. बिकॉज मेरी कंपनी का काम है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना एंड अच्छे से प्रेजेंट करना, बट टैक्सेशन का पर्पस is on the part of the income tax authorities. So they try to make certain adjustments in your income because ultimately the tax is being charged on your income only, right? You have the operating profit. You tend to subtract the interest payments from the operating profit. So out of that remaining profit जो बचता है उस पे you charge tax. Okay, and tax charge करने का काम अपना नहीं है. It is the department of the income tax authorities or the taxation authorities. Deferred tax assets की बात करते हैं पहले. So when we talk about deferred tax assets, so make note of one thing. The accounting income is less than taxable income. Accounting income is less than taxable income. Accounting income मतलब मेरी कंपनी की बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो स्टेटमेंट्स मैंने बनाई हैं अकॉर्डिंग टू माय कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. That is my accounting income, the way by which I am accounting my income. And the taxable income is the way by which the income tax authorities are assessing my income. There are two books of accounts. Accounting income is मेरी कंपनी की books and taxable income is taxable authorities की companies की books. Okay. So in case of deferred tax assets, your accounting income is less than your taxable income, right? Your accounting income is less than your taxable income. Okay. So let's take a simple example. So this is basically you have a like revenue. So on the left hand side, year one income statement is the part of my company. And on the right hand side, it is as per the tax authorities. So if my company has earned a revenue of $3,000, I have subtracted a certain amount of expense. So that is basically the warranty expenses. अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा है एंड लाइक उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो उस पे जो खर्चा होगा वो मेरी कंपनी बेयर करेगी. सो दैट इज समथिंग एज द वारंटी एक्सपेंस. टैक्सेबल इनकम बचती है 2940. उस पे you charge a certain amount of tax. The tax payable comes out to be $882 and the net income is 2058. But what happens in case of the tax authorities? Everything is same, but one difference. They have not recognized the expenses like related to the warranty, right? यहाँ पे 60 का था amount, we had like $60 and यहाँ पे we have the amount as 0. ठीक है, क्यों? Income tax authorities will recognize the warranty expenses only when they are actually incurred. ये जो वारंटी के एक्सपेंसेस हैं लाइक अकॉर्डिंग टू माय कंपनी, तो मैंने बोला है अगर किसी भी प्रोडक्ट में या कमोडिटी में कोई भी डिफेक्ट आएगा तो 60 रुपीज तक का खर्चा मेरी कंपनी बेयर करेगी. तो मैंने पहले से ही उसको एक्सपेंसेस में डाल दिया. बट इन केस ऑफ टैक्स अथॉरिटीज दे से दैट 60 रुपीज कैन ओनली बी चार्ज्ड व्हेन द एक्चुअल प्रॉब्लम अकर्स. 60 रुपीज जब एक्चुअली मेरी कंपनी पे करेगी फॉर द टर्म्स ऑफ वारंटी एक्सपेंसेस तभी वो चार्ज करेंगे. तो 60 की जगह यू हैव द अमाउंट एज 0. तो क्या हुआ? योर नेट इनकम अकॉर्डिंग टू माई बुक्स, अकॉर्डिंग टू माई कंपनी बुक होगी कम. मतलब द अकाउंटिंग इनकम इज लेस एंड द टैक्सेबल इनकम इज मोर. So that is something the concept of deferred tax assets. But accounting income is less than your taxable income. But when you go to the concept of deferred tax liabilities, yeah. So when you go to the concept of deferred tax liabilities, in this case, it would be just a reverse. Your accounting income would be more than your taxable income. मतलब ये वाली इनकम जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इट वुड बी मोर देन योर टैक्सेबल इनकम. क्यों? इट हैपेंस मोर और लेस ड्यू टू द चेंज इन द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज बाय आवर कंपनीज. आइडियली एवरी कंपनी वुड चार्ज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है. अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? अगर 1 लाख की मशीनरी परचेज करी है एंड 20% का डेप्रिसिएशन है for 5 years, so that 20% would be charged on 1 lakh only. First year में भी वो depreciation 20,000 ही होगा, that is 20% of 1 lakh.
सेकेंड ईयर में भी वो 20,000 ही होगा, थर्ड ईयर में भी वो 20,000 पे ही होगा. स्ट्रेट लाइन मेथड, अ कांस्टेंट मेथड. But what do income tax authorities do? They charge the depreciation on the basis of accelerated depreciation method. They recognize accelerated depreciation method. अब accelerated depreciation method में क्या होता है? डबल रेट से टैक्स, मतलब कि डबल रेट से आपका depreciation चार्ज होता है. If, for example, according to straight line method, if the rate of depreciation was 20%, according to accelerated depreciation method, it might be 40%, twice. तो स्टार्टिंग के ईयर्स में मोर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज्ड, एंड जब ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो योर इनकम, योर फाइनल इनकम और द फाइनल प्रॉफिट दैट यू अर्न वुड बी लेस, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंसेस ज्यादा कट ऑफ हो जाएंगे इन द बुक्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज. एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बुक में इनकम में से अगर ज्यादा एक्सपेंसेस कट जाएंगे तो योर इनकम वुड बी लो. एंड मेरी बुक्स में, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहा हूं, माई इनकम वुड बी हाई. कॉमन सेंस, अगर मुझे 5 लाख की इनकम है, उसमें से मैं 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं, माई इनकम टर्न्स आउट टू बी 4,80,000, ज्यादा इन माई बुक्स. बट अगर वही 20,000 ट्वाइस द रेट से चार्ज हो रहा है इन द बुक्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, दैट इज 40,000, तो इट वुड बी 5 लाख माइनस दैट 40,000, 4,60,000. बेसिक कॉमन सेंस. ओके, सो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं. वन इज द डबल डिक्लाइनिंग मेथड, जो मैंने बोला. अगर 20% आपका स्ट्रेट लाइन में चार्ज हो रहा है तो इसमें आपका 40% होगा इंटू 2. 30 है तो 60, अगर 15 है तो 30. सेकेंड मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड. दिस मेथड इज बेसिकली, अगर आपके 5 ईयर्स, अगर वो बोल रहा है कि 5 ईयर्स तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सो व्हाट दे वुड डू, they would take the summation of the 5 years of the numbers. They'll add first year, second year, third year, fourth year, and fifth year. So when you add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, you get 15. Okay. And what do they do? In the first year, they charge 5 by 15. मतलब जो मशीनरी अगर आपने 1 लाख की खरीदी है, so 1 lakh into 5 by 15. In the second year, 1 lakh into 4 by 15. In the third year, 3 lakh into 3 by 15. So all these things you have to do. Okay. अगर 5 ईयर की जगह 6 साल होता तो 1 प्लस हम 6 तक करते तो आता 21. फर्स्ट ईयर का 6 by 21, सेकेंड का 5 by 21, थर्ड का like 4 by 21. So this is the sum of year digit method. You tend to add the sum of all the digits denominator में, and you start to go in the reverse manner. उल्टा, 5 साल है तो 15 का टोटल आया, 5 by 15 in first year, 4 by 15 second year, 3 by 15 third year, 2 by 15 and 1 by 15. That's it. ठीक है. So income tax authorities are charging the method of depreciation at twice the rate or more the rate than the straight line method. So that is one thing you need to know. The second thing we have to talk about is the difference between the reserves and provisions. Okay. So we have a systematic table here. So the first difference says that the reserves are made to strengthen the financial position of the business and meet the unknown liabilities and losses. And provisions are made to meet the specific liabilities or contingencies. Example, the provision of doubtful debt. Simple लेके चलते हैं. ठीक है. First you have the concept of reserves. So reserves are something which you keep extra money. ठीक है. जो भी तुम्हारे पास extra money है. Shall you have your personal funds or you have the funds of the company? Some extra funds, some extra money, some extra profit or some extra cash flows which are kept by the company for the purpose of expansion or diversification. Okay, company को आगे बढ़ना है, company को अपनी shops बढ़ानी है, expansion facilities बढ़ानी है या फिर production बढ़ानी है, तो basically for those cases you'll be using like your reserves. But in case of provisions, these are met अगर कुछ आगे जाके कंपनी के साथ कुछ गलत हो जाए. ठीक है, फॉर अ सर्टन कॉन्टिजेंसी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ द कंपनी को लगा कि अगले साल हमारी सेल्स वुड बी लाइक 2 लाख रुपीज, बट आइडियली द सेल्स हैपन टू बी जस्ट 20,000 रुपीज, इतना ज्यादा लॉस हो गया. तो ऐसे लॉसेस के लिए, ऐसी कॉन्टिजेंसीज के लिए द कंपनी मस्ट हैव सम मनी
कि कंपनी इज एबल टू सस्टेन इट सेल्फ इन फ्यूचर। ऐसा ना हो कि एक छोटे से लॉस की वजह से, एक साल के लॉस की वजह से द कंपनी गोज इन टू बैंक्रप्सी एंड कंपनी बंद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। So these things you should know. Reserves are basically which are kept by the company for the purpose of expansion or diversification or to strengthen its operations. But provisions are something which are set aside to meet some contingencies. आगे जाके कुछ गलत हो गया, कोविड आ गया, कहीं सुनामी आ गई या साइक्लोन हो गया, एंड दैट इफेक्टेड द बिजनेस ऑपरेशन। सो इन चीजों के लिए कंपनी के पास पैसा हो। ओके, रिजर्व्स आर ओनली मेड व्हेन द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। कॉमन सेंस, कंपनी के पास पैसा होगा, कैश होगा, प्रॉफिट होगा, तभी उसके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा फॉर एक्सपेंशन, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, राइट। वेयर एज प्रोविजंस हैव टू बी केप्ट। अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत हो गया, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट मस्ट बी देयर विद द कंपनी। These reserves can be distributed as dividends. एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास है तो शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए just give them as dividends. But the provisions cannot be used as dividends because they are just met for some contingencies. तो वो पैसा हम कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। Reserves are the appropriation of profit and provisions are the charge against profit. ठीक है, appropriation क्यों बोलते हैं? Because these are basically used in an appropriate manner, or these are basically used for some positive aspects of the business to strengthen the company for expansion. But the provisions are basically a charge. Okay, it's a negative charge. कुछ गलत हुआ कंपनी में तो पैसा कंपनी को निकालना ही पड़ेगा। Okay, it is not mandatory for the company to create reserves, but mandatory है to create provisions. Extra पैसा कंपनी के पास चाहे हो ना हो, but for the contingencies, कुछ गलत ना हो जाए, उसके लिए कंपनी के पास must have the amount. The reserves are shown on the liability side of the balance sheet, and the provisions are either shown on the liability side of the balance sheet or as a deduction from the concerned asset. मतलब कि provisions को अब liability side पे show कर सकते हो, या you can subtract the provision amount from the total assets amount in the balance sheet. Okay. Then your reserves are used for the purpose of investment we talked about, like expansion and diversification. And provisions cannot be used for the purpose of investment. Okay. So that are the basic difference between the concept of reserves and provisions that you should know. So that was quite clear, I believe. Next, we have the banking ratios, the most important banking ratios. So these ratios are some of the ratios. Okay. These are not all of the banking ratios, but a few of the most important ratios that you should know. Okay. So these few of the most important ratios are the loan to value, installment to income, CASA ratio, credit to deposits, your NII, your capital adequacy ratios, and all those things. So banking ratios में हमारा first ratio आता है loan to value ratio. So this ratio is basically showing you against the asset value how much loan you have taken. To keep it simple, if you want to purchase a house for like 20 crore rupees, अगर 20 करोड़ का आपको अपना घर खरीदना है, तो इस 20 करोड़ के लिए आपने कितना लोन लिया है? Out of that 20 crores, because 20 crore is the value of that asset. To buy that asset of 20 crores, how much loan you have taken? Ideally, the limit which banks allows is 80%. In some cases, it goes on to 90% max to max. ठीक है, but full loan नहीं देता बैंक. You must have at least 20% of amount with you. तो अगर 80% का लोन लिया है, तो that 80% would be the loan to value ratio. तो इसका कहने का मतलब है, अगर आपने कोई भी एसेट लिया है, उसके वैल्यू का आपने जितना भी लोन लिया है, that is loan to value ratio. If you have purchased an asset of 1 lakh rupees, for that you have taken a loan of 20,000 rupees. The loan to value ratio, it comes out to be value of the asset is 1 lakh rupees, loan लिया है बस 20,000 का, and 80,000 की you people have made the down payment. So 20%, 20 by 100, 20% is the loan to value ratio. Total asset का कितनी percentage loan लिया है, loan to value ratio. Again, this loan to value ratio को लोग बोलते हैं ज्यादा होना चाहिए या कम. According to the banking point of view, अगर तुम banking companies को analyze कर रहे हो, this ratio should be as high as possible, because bank चाहेगा कि लोग मेरे पास आए and loan लें.
बिकॉज जितने लोन्स बैंक देगा उतनी क्रेडिबिलिटी बैंक की बढ़ेगी, ठीक है, कि बैंक के पास पैसा है, बैंक लोन दे रहा है. बट फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो घर खरीद रहा है, उसके लिए द लोन टू वैल्यू रेशियो मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, because ultimately the person will have to pay the principal amount and most importantly interest payment. तो बैंक तो गेन कर ही रहा है, उसको प्रिंसिपल मिल रहा है एंड इंटरेस्ट मिल ही रहा है. सो फ्रॉम द बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस लोन टू वैल्यू मस्ट बी हाई, बट फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी लो. देन इंस्टॉलमेंट टू इनकम रेशियो. इंस्टॉलमेंट टू इनकम रेशियो क्या होता है? ऑब्वियसली अगर लोन लिया है, यू पीपल वुड बी पेइंग द ईएमआई, द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स. Equated monthly installments में you will have the principal amount and the interest amount. So that is nothing but your installment amount. And income is nothing, तुम्हारी कितनी income है. तो उस income में से how much EMI you pay. So that is your installment income ratio. Like मतलब simple example, if you are earning an income of like 1 lakh per year, उसमें से 20,000 you pay as installment. 20,000 by your 1 lakh. So 20% is your installment to income ratio. Up now, this ratio should be high or low. Okay. According to bank, अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो बैंक वांट्स कि आपकी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलमेंट मिले, ठीक है. तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक चाहेगा कि ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स मिले. एंड अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, व्हेन कैन द इंस्टॉलमेंट टू इनकम रेशियो बी हायर? इनकम कम होनी चाहिए एंड इंस्टॉलमेंट ज्यादा होनी चाहिए. तो बैंक को अल्टीमेटली अपने पैसों से मतलब है. सो बैंक विल वांट दिस रेशियो शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. इनकम चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, बैंक को मतलब नहीं है, बट इंस्टॉलमेंट पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है. अगर तुम बैंक को एनालाइज कर रहे हो तो दिस रेशियो शुड बी हाई, बट अगेन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस रेशियो शुड बी लो. तुम्हारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए एंड ईएमआई कम होनी चाहिए, ठीक है. देन द कासा रेशियो. CA is for the current account and SA is for the saving account. So saving account is generally अपने जो नॉर्मल लोग मेंटेन करते हैं, जिसपे मतलब 3 से like 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. And CA is the current account which is mostly maintained by the businessman. Because in saving account like you have a certain limit कि you have मतलब कि तुम इतना ही अमाउंट तुम डिपॉजिट उसमें कर सकते हो. बट करंट जो तुम्हारे CA होता है like the current account, उसमें लिमिट इज मच मोर. ओके. तो बेसिकली योर करंट अकाउंट इज यूज फॉर द बिजनेसमैन. अब इसमें तुम्हारा आता है योर करंट अकाउंट प्लस योर सेविंग अकाउंट का टोटल पैसा डिवाइडेड बाय द टोटल डिपॉजिट्स, एंड योर टोटल डिपॉजिट्स इंक्लूड द टोटल बैंक के डिपॉजिट्स. तो ये बोल रहा है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा है वो कितना है एज कंपेयर टू द टोटल डिपॉजिट्स. सो दैट व्हाट दिस रेशियो इज टेलिंग यू. ओके, सो दैट वन थिंग यू पीपल शुड नो. Right. So this CASA ratio is basically telling you the proportion of the current accounts and the saving accounts to the total deposits. And total deposits में सब कुछ है, ठीक है. तुम्हारे ये करंट अकाउंट्स भी होंगे, तुम्हारे सेविंग अकाउंट्स भी होंगे, तुम्हारे बाकी डिपॉजिट्स भी होंगे, एफडीज एंड अदर डिपॉजिट्स. अकॉर्डिंग टू बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू लाइक दिस रेशियो शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, बिकॉज अगर ये रेशियो हाई है तो बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वुड बी एज लो एज पॉसिबल. So CASA ratio तुम मान के चलना according from the bank's perspective, this ratio should be as high as possible. क्योंकि जितना high होगा, the borrowing cost would be as low as possible from the bank's point of view. The credit to deposit ratio. Simple. जितना पैसा बैंक के पास आया, because बैंक के पास जो deposits आते हैं, out of those deposits only the bank lends money. So again this ratio should be as high as possible. बैंक should be able to give as much loans as possible. अभी हम NPS की बात नहीं कर रहे हैं. Okay. The larger the credit the bank extends, the more faithful and credibility the bank has. Okay. Then we have the net interest margin. Again, interest income minus interest expense by total assets. Again, whatever the bank is earning, बैंक को जो interest payment मिल रही है, बैंक ने जो लोगों को लोन दिया है, the bank wants it gets more interest payment from that as compared to the interest payment the bank pays to other organizations. That is, बैंक चाहता है कि उसको पैसा ज्यादा मिले लोगों से EMI के थ्रू as compared to जितना पैसा वो खुद दे रहा है. That is why banks borrow at a low rate of interest and they give you loans at a high rate of interest.
बैंक ने किसी भी कंपनी से लोन लिया हो या आरबीआई से लोन लिया हो, वो कम पैसों में लेता है, एंड आम जनता को इट गिव्स लोन एट अ हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, and that is the spread that the bank occurs. This interest income minus your interest expense is the profit that the bank is incurring, the net interest margin that the bank is making, or the spread that the bank is making. इसको हम spread भी बोलते हैं. Okay, I'll type it for you if you want. इस फैक्टर को हम spread भी बोलते हैं. We also call it as spread. Okay. Then the last ratio you have, again, the net interest margin should be as high as possible because bank wants कि bank को पैसा मिले ज़्यादा. Then you have the capital adequacy ratio. Again, this ratio should be as high as possible because bank के पास ज़्यादा से ज़्यादा capital होनी चाहिए. Again, it says the formula tier 1 capital plus tier 2 capital upon the risk weighted assets. तो इसमें क्या होता है, जो like you have some Basel norms by the bank, like 3 Basel norms, Basel 1, Basel 2 and Basel 3. So talking particularly about the Basel 2 norms, वहाँ पे you have the tier capitals, tier 1, tier 2 and tier 3. So in tier 1 capital, you have the major reserves of the bank or the equity of the bank. Bank की equity and bank के reserves you have in tier 1. In tier 2, you have all the debts or the hybrid instruments of the banks. Hybrid matlab both equity and debt. And in tier 3, you have those instruments which are of debt, but they are a kind of more risky debt. Okay. So इसमें बस हम tier 1 and tier 2 की हम लेते हैं capital and we tend to divide it by the risk weighted assets. ठीक है. So the capital must be as high as possible from the banking point of view. So the capital adequacy ratio must be as high as possible. And what do we mean by the risk weighted assets? It is simply, मान लो equity में, if you have invested like 40% in equity, okay, and you think that the riskiness of equity is 20%. So 40% जितना तुमने equity में किया है invest, you'll multiply it with 20% because 20% is the risk. Similarly, मान लो 20% you have like invested अपने amount, 40% हो गया, तो बाकी हमारे पास बचा 60. तो 20% you have invested in treasury bills. Okay, and treasury bills का risk is almost equivalent to zero, which people say. But there is a certain amount of risk as well. उसकी हम बात करेंगे like आगे के sessions में. तो मान लो कि 0 point मतलब कि 1% risk है. ठीक है. You have 60 total. Now like 40 is left. मान लो that rest 40 you also took as a debt. And debt में your riskiness was 10%. 0.10. So 0.40 is the proportion of equity into मतलब कि 20% का risk है, plus 20% in treasury bills जिसमें like 1% का risk था, plus remaining 40% in debt जिसमें 10% का risk था. So this is how you calculate the risk weighted assets. तो बैंक के पास बहुत सारे assets होंगे and accordingly the bank takes out the मतलब कि like the risk weighted assets. Okay, बैंक के पास equity, तो equity को it will tend to multiply by the risk percentage, then debt को it will multiply, treasury bills को, and कोई भी other securities होंगी, the bank will multiply it with the amount of risk. Okay, so these were like some of the most important banking ratios that we talked about. इसके अलावा भी होते हैं banking ratios, but these are the most important ones, I believe. ठीक है. So a bonus for you in this session. Okay, a bonus for you. We have two scientific indicators in fundamental analysis. Okay, scientific indicators in fundamental analysis. First, you have the Graham number, and second, you have the Z score. This Z score is also called the Altman Z score. Okay, so talking first about the Graham number. So the formula of Graham number is, मतलब कि root के अंदर में you have this whole formula. That is 22.5 into EPS into the book value per share. EPS क्या होता है and book value per share क्या होता है, we have talked about in the previous sessions. And this formula was given by Mr. Graham only. Okay, again I would say, तो मैं technical analysis में बात कर रहा था. These formulas or assumptions, they might differ for different person only on the basis of behavioral finance and financial psychology. अब do not ask me कि 22.5 ही क्यों है and EPS ही क्यों है and book value per share क्यों है. This is according to Mr. Graham. This can change according to like different people. Okay. So basically,
when you put in the values of EPS of the company and book value of the company, मान लो you put in some values and you got the answer as 200 rupees. बट अगर मार्केट में शेयर ट्रेड कर रहा है एट 500 रुपीज, इट मीन्स द शेयर इज ओवर वैल्यूड, मतलब कि 200 से वो ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है. बट अगर वो 200 से कम पे ट्रेड कर रहा है, 100 पे, 50 पे, इट मीन्स इट इज अंडर वैल्यूड. सो ग्राम नंबर इज बेसिकली टेलिंग यू कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो वैल्यू आएगी, सो दैट वुड बी द फेयर वैल्यू. एंड उससे ज्यादा या कम जो वैल्यू आई, अकॉर्डिंगली यू पीपल कैन से दैट द शेयर इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड. But this formula might not work always because it is again based on behavioral finance and financial psychology of Graham, of Mr. Graham. Again, another person was there, Altman. ठीक है, Altman ने एक अपना फॉर्मूला निकाला by the Z score. अब मुझसे ये मत पूछना कि 1.2 क्यों है and 1.4 क्यों है, 3.3 क्यों है. These were the different weights that were given by Altman Z, by the Altman, like Mr. Altman. उसने वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स को 1.2 का वेट दिया. उसने रिटेन्ड अर्निंग्स बाय टोटल एसेट्स को 1.4 का वेट दिया. उसने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय टोटल एसेट्स को 3.3 का वेट दिया. उसने टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय टोटल लायबिलिटीज को 0.6 का वेट दिया. उसने सेल्स बाय टोटल एसेट्स को लाइक 1 का वेट दिया. सो दिस वाज अगेन बेस्ड ऑन हिज फाइनेंशियल साइकोलॉजी एंड हिज अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं वेट्स देना चाहूँ, मैं लाइक 1.2 की जगह मैं 2 दे सकता हूँ. अगर कोई और देना चाहे वो लाइक 1.4 की जगह मतलब कि 0.6 दे देगा. Again, that is based on your psychology, but these are like certain models which had been prepared by these people. Okay. So in Z score, उसने बोला you will have these values of the companies. So once you calculate, he gave a certain number as 1.8. उसने बोला कि 1.8 का benchmark बना दिया. उसने बोला like when you will have the values of A, B, C, D, E and you'll put these values in this formula. If your answer comes less than 1.8, 1.8 से अगर आंसर कम आता है, it means the company is not to go for. उस कंपनी के शेयर्स मत खरीदो. The company can go into bankruptcy. उसने ये बोला अगर 1.8 से वैल्यू कम आ रही है. बट अगर 1.8 से ज्यादा की वैल्यू आ रही है, he said that the company is good. You can buy that company and the company won't go into bankruptcy. मतलब कि strong company है. अब ये 1.8 कहाँ से आया? This 1.8 was again based on his own personal biases, on his own assumptions, on his own behavioral finance, and again on his investor psychology. I can change this number from 1.8 to 2. Some other person can make it as 5 or 10. बोल सकते हैं मतलब कि 10 के नीचे अगर वैल्यू आ रही है तो कंपनी इज रॉन्ग, 10 के ऊपर आ रही है तो सही. बट अगेन यू हैव टू पुट दीज नंबर्स इन द रियल सेंस. हो सकता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी आ गई, मान लो कि रिलायंस आ गई, टाटा आ गई, एंड उसका वैल्यू इट केम एज लेस देन 1.8, देन दिस Z स्कोर वुड बी कैंसल आउट. इट वोंट वर्क. ठीक है, बिकॉज द कंपनी इज नॉट इनटू बैंक्रप्सी. द कंपनी इज स्केलिंग ग्रेट हाइट्स एंड हमको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं. तो रियल लाइफ में दीज स्कोर्स माइट नॉट ऑलवेज वर्क गुड. तो वो 1.8 की लिमिट को बढ़ा के अगर मान लो कि टाटा का स्कोर आ गया 10, सॉरी मतलब कि टाटा का स्कोर आ गया लाइक 1.5. ओके, अगेन टाटा इज नॉट इनटू बैंक्रप्सी, राइट. तो वो Z स्कोर की लिमिट 1.8 से 1 करनी पड़ेगी या फिर 0.6 करनी पड़ेगी ताकि 1.5 की वैल्यू ज्यादा दिखे, बिकॉज ज्यादा इज अगेन एन इंडिकेटर फॉर अ स्ट्रॉन्ग कंपनी. बट अगर हम Z स्कोर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दैट 1.8 वुड बी द लिमिट. बट इफ यू पीपल आर डूइंग योर ओन एनालिसिस, यू कैन चेंज दिस लिमिट. जस्ट ब्लाइंडली मत बोलना कि अगर टाटा की वैल्यू आ गई 1.5, then you say to the whole public that Tata is a bad company, तुम टाटा में इन्वेस्ट मत करो and bankruptcy है. Again, I'm not advising you to buy Tata. I'm not recommending you to buy the shares of Tata. I'm just taking a simple example. And that everyone knows Tata is a strong company. तो अगर 1.5 की वैल्यू आ गई है and blindly तुमने सबको बोल दिया कि Tata is a company into losses, bankruptcy, it's wrong. You'll have to shift the Altman Z score to a lower limit, right? And उस केस में this Z score like won't work. You'll have to create your own score. And that is where like new models come into place, new investor theories come into place, and people get recognized for their contribution towards finance. Maybe Altman के टाइम में कंपनीज की वैल्यू इससे मैच हो रही हो,
but आज के time में नहीं होंगी, and I can bet you on that. Okay, so that was something about advanced fundamental analysis we talked about. The next session we're gonna have is on Wednesday, and on Wednesday we're gonna talk about the IPOs, the initial public offerings. Okay, so that was all for today.